Welcome to lecture 5, Basic Semiconductor Physics, and this is second lecture for mobility. Fifth lecture and the first module, that is Basic Semiconductor Physics, the first module, and we are still in the second chapters. And in order to finish this chapter, this is the second lecture video. Okay, this is the naming convention if you get confused. Okay, let's get started with this lecture. Now this lecture is very much important because from this lecture we are going to understand 4 different very much important graphs that are associated with mobility. Now those 4 important graphs, from those 4 important graphs, three graphs where the mobility is variable and one graph where mobility mu it works as a constant. Now, what is a mobility we have understood in the previous lecture. Now let's understand how it is works as a variable with 3 different parameters. Now the first parameter is temperature versus mobility. Now with increase in temperature, how the mobilities varies. Sir, मुझे ये देख के डर लग रहा है. Sir, I am getting scared by what are these things that you have drawn? Okay, आपको clarity आएगा. It's a very simple thing. I have made this colorful thing to give you a beautiful clarity on this thing. So in this lecture, we are going to study about temperature variation. With the variation of temperature, how mobilities gets affected. Now there is two scattering is happening with increase in temperature. If you increase the temperature, 2 phenomena, 2 concepts, 2 ideas, 2 stories that we are going to learn today. One is impurity scattering wala story, another one is lattice scattering wala story. So up to certain temperature, impurity scattering stories plays vital role, and after certain temperature, lattice scattering story plays vital role. So now what is the impurity scattering story? Let's know that. First, impurity scattering. So with increase in temperature, before get into this diagram, so please do concentrate here. With increase in temperature, drift velocity value increases. Drift velocity of electron increases. So let's understand, there is a very less temperature here, there is a bit temperature that I have increased, there is another amount of temperature that I have increased. So this numeric value, don't take personal this numerical value. Is numerical value ko personally mat lena. I have just defined here to make you understand or to make you give you clarity. Okay, so at certain temperature, at very low temperature, the movement of electrons, look here, the movement of electrons, it should have go in this way, बट ये ऐसे नहीं जाके ऐसे मूवमेंट नहीं होता है. With increase in temperature, drift velocity of electron increases, so electron should move in this way. With increase in temperature, drift velocity increases, the electron should move in this way, but ऐसे नहीं जाके electron ऐसे जाता है. देखोगे ऐसे हो जाता है, जाने के टाइम फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है. So this is the case of for one electron. So you can imagine for different electrons वो कैसे problems create होते होंगे. फिर इस impurity से भी ऐसे हो जाते हैं. So now in the second case, look here in the second case. Now in the second case, if you increase the value of temperature from 10 Kelvin to 20 Kelvin for an example, so by increase in temperature, drift velocity value will increase. तो यहाँ पे जिस velocity से जा रहा था electron थोड़ा, so impurity scattering will happen, but it will be less as that of before. Now if you increase very much amount, this impurity scattering will never going to affect the movement of electron. So I can say with increase in temperature, drift velocity increases, as we know that. Scattering of electron, जो scattering हो रहा था electrons का, scattering of electrons, you can clearly see here the scattering of electrons, whatever the scattering was happening before, वो scattering decrease हो जाता है. Okay, so scattering of electron, you can understand this point, scattering of electron by impurity dose decreases. So that is why with increase in temperature, drift velocity value increases. With increase in temperature, drift velocity value increases, due to which mobility will increases. So that is why in the first part आपका यहाँ पे increase होगा. ऐसे करके पहले
ये इंक्रीज होगा अप टू सर्टन टेम्परेचर, बिकॉज impurity scattering will not going to affect the movement of electron. So if you increase the temperature, mobility will be increases. So that is what I have written here. Now look here, impurity scattering में क्या हम लोगों ने सीखा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, that is why mobility is also increases. So the scattering of impurity will not going to affect the movement of electron. So the movement of electron will not going to be affected by the impurities if you increase the temperature, and as a result of which mobility mu increases. So टेम्परेचर इंक्रीजेस होने से मोबिलिटी इंक्रीज होता है. डायग्राम को ऐसे बना दिया तो आप लोग ये पॉइंट समझ गए आराम से. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे हो गया. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, लैटिस स्कैटरिंग. लैटिस स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? वी हैव टेकन आइडियल केस हियर, बट मटेरियल साइंस में आई विल गिव यू लॉट क्लैरिटी ऑन दिस थिंग. सो लैटिस पॉइंट में एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है. लेट्स कंसिडर इन दिस वे, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट. नाउ आफ्टर सर्टन टेम्परेचर, नाउ लुक हियर, after certain temperature, if we increase after this temperature, if you increase the temperature after this, if you increase the temperature, so when you increase the temperature after certain points, so क्या होता है पता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है. those atoms who are there in the lattice points, they starts vibration. उन लोग में ऑसिलेशंस होते हैं. सो द लैटिस एटम्स, उनको बोलते हैं लैटिस एटम्स, वो अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फॉर द एटम्स हु आर द एट द लैटिस पॉइंट, the oscillations frequency increases and they starts vibrating on their main position. So the electrons which were moving smoothly, you can see here, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहीं से मूव कर रहा था ना, यहाँ पे आराम से मूव कर रहा था बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आराम से मूव करता था. पर यहाँ पे पता है क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? आफ्टर सर्टन टेम्परेचर, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फॉर द एटम्स एट द लैटिस पॉइंट दैट इंक्रीजेस एंड दे स्टार्ट ऑक्सिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन टू एक्सपीरियंस मोर कोलिजन्स. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो लैटिस पॉइंट में कोलिजन होगा. मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी will decreases because drift velocity gets affected due to the vibration which will happen with increase in temperature, the lattice vibration which will going to happen. So drift velocity of electron which will decreases. So I can say that with increase in temperature after certain point, with that certain point means what? ये वाला पॉइंट के बाद, ठीक है, दैट सर्टन पॉइंट मतलब इस टेम्परेचर से ज़्यादा. इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आफ्टर सर्टन पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू डिक्रीजेस, ड्यू टू हिज मोबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे आपका मोबिलिटी ऐसे डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे आपका मोबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ये से डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यहाँ हम देखते हैं. सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोबिलिटी इंक्रीजेस अप टू सर्टन पॉइंट एंड आफ्टर दैट मोबिलिटी decreases due to lattice scattering. So this is the phenomena of impurity scattering or lattice scattering. इसमें आपको confused होने की कोई ज़रूरत नहीं. Now there is couple of note points that I'd like to tell you. Experimentally the value mu proportional to t to the power 3/2 इस तरीके रेशियो में ये इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो मोबिलिटी जो इंक्रीज होता है ना, ये वाला लैटिस स्कैटरिंग वाला पोजीशन में, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन विच द impurity scattering, the lattice scattering area. ठीक है, दिस द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. नाउ मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स म्यू प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -m. तो यहाँ पे मैं टी टू द पावर 3/2 मतलब क्या है? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी आइदर 1.5 और म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी -1.5. ये वाला वही वाला एरिया है. सो एक्चुअली देर आर सर्टन मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, मोस्ट ऑफ द केसेस, ये m वैल्यू for germanium semiconductor, for silicon semiconductor, the value varies like this. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये पॉइंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.